Hello students, so welcome to IE. In this video, we are going to discuss important numerical on the photodiode. So now let's get started with this numerical. So in this numerical, what is written? A certain photo surface has a spectral sensitivity. There are different technical terms here. The first one is the photo surface. A certain photo surface has a spectral sensitivity. This is also an important technical term. Spectral sensitivity of 6 milliwatt per watt of incident radiation of lambda is equals to 2537 angstrom. Now, the number of electrons emitted photoelectrically by a pulse of radiation consisting of 10,000 photons of this wavelength will be dash. So we have to find the number of electrons, that means the number of charges. Now first let us understand what is photo surface. Photo surface मतलब कि कोई surface के ऊपर अगर मेरा photons incident होते हैं, then that photons will be absorbed by the that surface and it will emit some electrons. Some electron उसके अंदर current flow होंगे. So that is called the photo surface. So photo surface का मतलब क्या है? Photosensitive surface. So the photosensitive surface will produce some amount of current inside the material if the photons incident on the material. That is the photo surface. And what is spectral sensitivity? Spectral sensitivity का मतलब होता है कि spectral मतलब the wavelength. So different wavelength के लिए different types of different amount of absorption होता है, उसको बोलते हैं spectral sensitivity. The amount of sensitiveness relates to individual wavelength is called the spectral sensitivity of 6 milliampere. So if यहाँ पे क्या लिखा है? Spectral sensitivity of 6 milliampere per watt. इसका meaning क्या है? What is the meaning of this? So now we want to understand the meaning of this term. First, you have to understand the meaning of this term. What is the meaning of this term? So, the meaning of this term का मतलब होता है कि suppose if we have a photo surface, suppose this is a photo surface and the light is or wavelength of light is incidenting on this surface like this. So now, लाइट का मतलब क्या होता है? फोटोन पार्टिकल्स, that means photons are incidenting, and these after incidence of the photon on this surface will absorb this photon and it will produce some charge inside this material. So that is a photosensitive surface. Now spectral sensitivity of 6 milliampere per watt. What does it mean? It means that if ये वाले फोटोसेंसिटिव सरफेस के ऊपर if 1 watt of light energy, 1 watt of light energy incident on the surface, then 6 milliampere of photo current will be generated inside the material. ये मेरा था this meaning. अब इंसिडेंट जो रेडिएशन था, एनर्जी जो इंसिडेंट हो रहा है उसका वेवलेंथ क्या था? 2537. सो यहां पे मेरा जो वेवलेंथ हो रहा था दैट वाज 2537 angstrom. This wavelength of light was incidenting on the surface, and if 1 watt of this light energy of 2537 angstrom incident on the surface, then 6 milliampere of current will flow or photocurrent will be generated inside the semiconductor. This means the spectral sensitivity of 6 milliampere per watt. Now, the number of electrons
emitted photoelectrically by a pulse of radiation consisting of 10,000 photons. So इस वेवलेंथ का मुझे 10,000 photons इसके ऊपर गिरेंगे, गिरने के बाद कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जेनरेट होगा, ये आपको ढूंढना है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट, ये जो मेरा स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी है, तो स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी आपको समझ में आया. अब नाउ ये जो फोटोन गिर रहे हैं, ये जो ऊपर से फोटोन यहाँ पे गिर रहा है, तो ईच फोटोन का एनर्जी क्या होगा, पहले उसको ढूंढ लेते हैं. सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड दैट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन. सो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या होगा? सो लेट अस डिनोट इट एज EPHOTON, E photon. And that can be written by a well-known formula. You know that the formula that is 1.24 divided by the lambda, and the lambda must be in the micrometer. Then the energy of the photon will be in the electron volt. So this is a well-known formula of finding the energy of a photon. Now मेरे पास जो लैम्डा गिवन है वो क्या है, एंगस्ट्रॉन पे गिवन है. सो लेट अस फाइंड द लैम्डा. मेरा जो लैम्डा है, दैट लैम्डा इज 2537 एंगस्ट्रॉम. वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू माइक्रोमीटर, तभी तो मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा. सो दैट मीन्स ये मेरा एंगस्ट्रॉन को मैंने पहले 2537 इंटू 10⁻⁻10 मीटर कर रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे जो एंगस्ट्रॉम है दैट इज 10⁻⁻10. सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू माइक्रोमीटर. सो 2537 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻6 इंटू माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर में कन्वर्ट हो गया. अब 10⁻6 और 10⁻⁻10 काट आउट होके आपके पास आएंगे 2537 इंटू 10⁻⁻4 माइक्रोमीटर. सो अल्टीमेटली आपका वैल्यू आएगा 0.2537 micrometer. So this is the lambda in micrometer. So I will put this lambda here. So now if I put this lambda here, so what will be the value? So 1.24 divided by 0.2537 micrometer. So if you calculate this, then you will get a value of energy of each photon. So energy of each photon आपका पास जो आएगा E photon. So for that you have to divide 1.24 divided by 0.2537. So it will give a value of 4.8876 electron volt. So this is the energy of one photon. Now इस फोटोन की तरह कितने फोटोन आ रहा है? 10,000 of photon. So let us find the energy of 10,000 photon. So what will be the energy of 10,000 photons? So energy of 10,000 photons क्या होगा? 10,000 into this one, so 4.8876, and this will be in electron volt. Now let us convert this into the joule. तो जूल पे अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा 10,000 आएगा इंटू 4.8876 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. तो जूल में कन्वर्ट हो गया. तो ये था मेरा 10,000 जो फोटॉन्स था, 10,000 फोटॉन्स, उसका टोटल एनर्जी. अब मुझे ये 10,000 फोटॉन्स कहां पे गिर रहा है? ये वाले फोटो सरफेस के ऊपर. सो फोटो सरफेस के ऊपर मेरा अगर 10,000 फोटॉन्स गिरेगा तो उसके अंदर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जनरेट होंगे, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज. सो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज. सो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज मेरा जो आएंगे दैट इज कैपिटल, अगर क्यू बोलते हैं तो उसका यूनिट क्या होगा? कूलॉम्ब. तो कूलॉम्ब में आएंगे. So the total amount of charge that will be generated inside this photo surface due to the incident of this 10,000 photons will be the total energy into the spectral sensitivity. Spectral
sensitivity. So this is the total amount of charge that will be developed inside the photosurface due to this 10,000 photons. Now let us find the number of charge, that means the number of electrons. So the number of electrons क्या generate होंगे? So the number of electrons is nothing but the total amount of charge, this thing, divided by the charge of the individual electron. So it will be total amount of charge divided by the charge of individual electron. That means it is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ये वाला होता है. So now if I put this value, ये वैल्यू क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी क्या है? 10,000. So 10,000 into आपका 4.8876 into 1.6 into 10 to the power minus 19. So 1.6 into 10 to the power minus 19, उसके साथ आपका स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी दैट इज द 6 मिली एम्पियर पर वाट. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा into 6. So divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. Now you have to calculate this in a calculator. If you do the calculation, you will get it as 293.256. So that means ये मेरा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी आपका डेसिमल में नहीं हो सकता. सो दैट मीन्स वी हैव टू राउंड अप दिस. सो जनरली वी कैन से यहाँ पे 293 है और वी कैन से इट इज 293. सो दैट मीन्स the total number of electrons that has been generated inside this photosurface due to this 10,000 photons of lambda 2537 is 293. This is the total number of electrons that has been generated. So hopefully you have enjoyed this video and thank you for watching the video.